Good morning students, welcome you on your online class of English. In today's topic, the sentence, I shall explain you about what is sentence and its kinds. So let's start today's topic, the sentence, and remember beta, this is your revision video. Now start from a sentence. Look at these sentences. Hockey, play, every day, you, nest, office, the father, went yesterday. Now beta, here are two examples of sentences. Now read these sentences. Hockey, play, every day, you. There is any meaning, any sense you understand with these words? Can you call it a sentence? क्या आप इसको एक sentence कह सकते हैं? Can you call it a sentence बेटा? No, we cannot call it a sentence. We cannot tell it a sentence because क्यों नहीं कह सकते? Reason क्या है? क्यों नहीं कह सकते हम ये sentence है? Hockey, play, every day, you. एक sentence में बेटा subject, object, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन्हीं चीजों की नीड होती है. तो यहाँ है हमारा सब्जेक्ट यू है, प्ले हमारा वर्ब है, मेन वर्ब, हॉकी ऑब्जेक्ट है. फिर व्हाट इज द रीजन दैट वी कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस? यस बेटा, देयर इज नॉट प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बिकॉज देयर इज नॉट द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. जो वर्ड्स है उन्हें सीक्वेंस में नहीं रखा गया है. नाउ सेकंड, ऑफिस द फादर वेंट यस्टरडे. देयर इज नो सेंस इन दीज वर्ड्स. नाउ बेटा वी मेक द सेंटेंस फ्रॉम दीज वर्ड्स. फर्स्ट, you play hockey. You play hockey every day. Now sense is clear. अब इसका सेंस क्या हो गया? क्लियर हो गया. आपको सेंटेंस समझ में आ गया. You play hockey every day. Second, the father. What is the subject? Father. And in first sentence, subject you. The father, verb, went. Office, went to office yesterday. Now sense is clear. In first sentence, subject is you, play, verb, main verb, hockey, object, and you, subject. Now the father, subject, went, main verb, office, object. So now sentence is clear. It means to say that beta, when words are putting in proper order, these sequence is called a sentence. means शब्दों का, वर्ड्स का
प्रॉपर ऑर्डर में रखना ही सेंटेंस कहलाता है। तो नाउ वी शैल नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? Have you known about the definition of a sentence, beta? Can you tell me about the definition of a sentence? Yes, a group of words that makes complete sense is called sentence. A group of words that make complete sense is called sentence. A group of words, a group of words that makes complete sense, that makes complete sense is called a sentence. Is called a sentence. Now it is the definition of a sentence. Means बेटा देखिए समझने की कोशिश कीजिए. Try to understand बेटा. A group of words. A group of words that makes complete sense. That makes meaningful the words. Is called a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस बनाता है, पूरा अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. तो नाउ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. नाउ बेटा सम पॉइंट्स अबाउट सेंटेंस. रिमेंबर these points about sentence. सेंटेंस के लिए बेटा हमेशा इन पॉइंट्स को याद रखिएगा. फर्स्ट है a sentence makes complete sense. A sentence makes complete sense. Complete sense. A sentence makes complete sense. Second है it begins with a capital letter. It begins with a capital letter. एक जो सेंटेंस होता है बेटा, a sentence always begins with a capital letter. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट है बेटा the words in a sentence. The words in a sentence. The words in a sentence. The words in a sentence must be in their proper order. Must be in their proper order. एक सेंटेंस के लिए बेटा उसके जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. नेक्स्ट है बेटा a sentence ends with a full stop. A sentence ends with full stop. एक सेंटेंस होता है वो किससे, जो उसके एंड होता है बेटा, तो उसके अंत में, उसके एंड में क्या आता है, फुल स्टॉप. विद अ फुल स्टॉप अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन, a mark of
Now beta, you are thinking about these marks. What is full stop? What is a mark of interrogation? And what is a mark of exclamation? So now beta, I tell you about these marks: full stop, interrogation, and exclamation mark. These are the marks of full stop, interrogation, and exclamation mark. That's clear? So beta, always remember these 4 points about sentence. A sentence makes complete sense. A sentence makes complete sense. It begins with a capital letter. It begins with a capital letter. The words in a sentence must be in their proper order. एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, सही सीक्वेंस में होने चाहिए. A sentence ends with full stop, a mark of interrogation, and a mark of exclamation. Now beta, if you have no knowledge या फिर if you don't know about these marks, this is full stop, interrogation, and exclamation. That's clear? Okay. Next beta, the phrase. We shall know about phrase. What is phrase? The phrase. Now beta, what do you understand by the phrase? Tell me about phrase, because this is your revision video beta. Yes, some group of words make sense but not complete sense is called phrase. Yes beta, right answer. Some group of words that make sense but not complete sense, is called phrase. Now beta, phrase किसे कहते हैं? शब्दों के ऐसे समूह को जो सेंस तो निकालता है बट कंप्लीट सेंस नहीं निकालता. इट हैज नीड टू कंप्लीट हिज सेंस ऑन अदर सेंटेंस. मींस जिसको अपना सेंस क्लियर करने के लिए सेंटेंस की नीड होती है. फॉर एग्जांपल, एन इंटरेस्टिंग book. An interesting book. Second beta, last night. So these are the example of phrase. These are the example of phrase. Now beta, अब इन एग्जाम्पल से हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि what is the sense of these words, but it is not complete sense. An interesting book, we know an interesting book, but क्या? अब एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर करती हूँ बेटा. ये फ्रेज है हमारा, देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में मैं इसको ऐड करूंगी. I am reading an interesting book. I am reading an interesting book. मैं एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ. सेकंड, लास्ट नाइट, तो you went to see a movie. You went to see a movie last night. Last night.
Now sense is clear of these phrases. Phrase an interesting book and last night. So now the sense is clear of this phrase. Now beta sense is clear from these phrases and interesting book. Interesting book and last night. I am reading an interesting book. You went to see a movie last night. Now beta we shall discuss about parts of a sentence. What is the parts of a sentence? Parts of a sentence. There are two parts of a sentence. First, subject and second, predicate. Subject and predicate. सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है ना? तो इनके बारे में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो बेटा as I know that you know very well about subject. What is subject? Subject is doer, that who make actions. Subject, the subject of a sentence usually comes first, but occasionally it may be placed after the predicate. कभी कभी ऐसा भी होता है कि predicate के बाद भी आ जाता है, but usually subject sentence में पहले ही आता है. The verb is an essential part of the predicate. जो predicate होता है उसमें verb हमारा essential part होता है, means necessary part होता है. जहाँ से हमारी verb start होती है वहाँ से predicate start कर देते हैं. Next बेटा, in an imperative sentence the subject is always you. जो हमारा imperative sentence होता है, जिन sentences में हम command, request, advice ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम imperative sentence कहते हैं. और imperative sentence में हमारा subject हमेशा क्या होता है? You होता है. You is always you. We can say that in imperative sentence our subject always you. Now but it is implied. जैसे for example बेटा मैं यहाँ पर कुछ sentences लिख रही हूँ और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगी. द सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which names what the sentence is about. What the sentence is about. And predicate, the part of a sentence which says something about the subject. देखिए ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है. अब सब्जेक्ट का वर्क क्या है बेटा कि which names what the subject is about, what the sentence is about. What the sentence is about means सब्जेक्ट हमारा ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, और जो प्रेडिकेट है वो हमें बताता है कि समथिंग
one. Tulsi is one of them. Now beta, you know Tulsi is a worshipping tree. worshipping tree को हम तुलसी बोलते हैं. तो here Tulsi is subject and is one of them predicate. That's clear. नेक्स्ट सेंटेंस हम इसके अलावा और भी सेंटेंस को रिवाइज करेंगे. आपकी जो एक्सरसाइज है उसे देखिए बेटा आगे. For example, drinking large quantities of water. Drinking large quantity of water. Drinking large quantity of water removes toxic substance. Removes toxic substance from our body. From our body. Now beta, in this sentence we shall identify the subject and predicate. So what is subject in this sentence and what is predicate? तो मैंने जैसा कि पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में कि प्रेडिकेट में आप याद रखिएगा जो वर्ब होती है वो एसेंशियल पार्ट होता है. ओके. और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? सब्जेक्ट का वर्ब क्या रहता है बेटा? सेंटेंस के बारे में बताता है. which names what the sentence is about. तो ये सेंटेंस आप देखिए पढ़िए. ड्रिंकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की अधिक मात्रा पीना. और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी. अगर हम अधिक से अधिक पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. तो हियर बेटा इन दिस सेंटेंस ड्रिंकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सब्जेक्ट. क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वाटर है, पानी पीने की बात हो रही है. अधिक से अधिक पानी पीना मीन जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है? वाटर के बारे में. पानी की लार्ज मात्रा पीने के बारे में. तो जो हमारा सब्जेक्ट का वर्ब होता है वो यही होता है कि which names the sentence is about. वो जो हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है. which names what the sentence is about. what the sentence is about. और second thing बेटा to be remember that verb is the essential part of predicate. तो removes is verb. removes present का है, as लगी हुई है उसमें सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है. तो यहाँ से हमारा predicate स्टार्ट होता है. predicate removes toxic substance from the body. It is predicate. That's clear बेटा. नेक्स्ट बेटा एक और यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे. This book gives very useful. This book gives very useful. This book gives very useful health tips. Health tips. Now beta, what is subject in this sentence? This book. This book is the subject and gives very useful health tips. Predicate. जो predicate होता है वो हमारा verb से स्टार्ट होता है क्योंकि verb predicate का essential part माना जाता है. Verb is considered the essential part of predicate. Now beta, next kinds of sentences. We shall discuss about
imperative and fourth exclamative. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो असर्टिव है बेटा, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। इन असर्टिव बेटा हमारे सब्जेक्ट हमारे जो सेंटेंस हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं एंड असर्टिव इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव। और इसमें बेटा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारा स्टेटमेंट के थ्रू होता है, मींस इसमें बताया जाता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट इंटरोगेटिव जो होते हैं सेंटेंस, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आस्क किया जाता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट बेटा इंपरेटिव। इंपरेटिव में बेटा कमांड, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सभी चीजें आ जाती हैं। एंड इन एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन। Now beta we shall discuss about these sentences through some examples. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन सेंटेंसेस का क्या करेंगे बेटा, रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा रिवीजन बाय सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। What is the assertive sentence? In assertive sentence beta our affirmative and negative both sentences are included. हमारे affirmative sentence and negative sentence both are included in assertive sentence and it is also called declarative sentence. So let's start from assertive sentence. Assertive. You have been elected. You have been elected the coach for the team. Now beta, can you tell me about this sentence that it is affirmative or negative? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा जो है वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? यस, इट इज अफर्मेटिव। Affirmative sentence and you have not been elected coach for the team. It is negative. It is negative. ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। तो both are affirmative and negative are included in assertive sentence. ये इसमें इंक्लूड होते हैं बेटा assertive में। मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल
The teacher has punished the all students. Next, number 2. The officer had given us very important the officer had given us very important tips for the training. The officer had given us very important tips for the training. So these sentences are included in assertive. These are affirmative sentences and negative. Number 3. She did not give me her purse. She did not give me her purse. She has never gone to Allahabad. So these are the example of assertive sentences. Now next, interrogative. What is interrogative sentences? I give you some example of interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentence. Whom do you want to? Whom do you want to give this? ये give it कर दीजिए, give this कर दीजिए. Next बेटा, next example. How many boys had participated in the game? How many boys had participated in the game? How much money have you? How much money have you? So these are some example of interrogative sentences. Look at these sentences. These sentences are begin from question word. जो interrogative sentences होते हैं वो question word से start होते हैं, या कुछ sentences हमारे helping verb से भी start होते हैं. कुछ ऐसे sentences भी होते हैं जो किससे start होते हैं बेटा? Helping verb से. For example, do you want to go home? Or they not? Are they not coming
आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। Imperative sentence, as you know बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, in imperative sentences always we say about command, request, advice, suggestion, instructions. These are main points of imperative sentences, and these sentences are start from verb. ये जो sentence होते हैं वो verb से start होते हैं, and subject you always in hidden position. इसका जो subject होता है बेटा you, वो हमेशा hidden position में रहता है, and subject is considered as you. और इसके जो subject माना जाता है वो किसको माना जाता है? you को. For example, open the book. Give some important notes on this topic. On this topic. Third, always speak the truth. Always speak the truth. Imperative sentences में negative sentences भी होते हैं. For example, don't play in the sun. Don't play in the sun. Don't run fast on the road. On the road. Number 6, never take anything from strangers. Okay, these are some example of imperative sentences. Open the book. Give some important notes on this topic. Always speak the truth. And these are the example of negative in imperative sentence. Don't play in the sun. Don't run fast on the road. Never take anything from the strangers. Next beta and last, exclamatory sentences. In exclamatory sentences, we express our strong feelings. Exclamatory. For example, how clever you are. What a beautiful scene that was. How beautiful the dress is. Alas,
ब्रेवो, ब्रेवो किसको एक्सप्रेस करता है बेटा? प्रेज को। यू हैड प्लेड वेरी वेल, very well. So now beta, these are some example of exclamatory sentences, and you can see that in the last of sentences the exclamation mark is given. In the last of the sentence exclamation mark is given. So beta, I hope you all understand about the sentences. What is sentence, what is phrase, what are the parts of a sentence. मैं क्लियर करती हूँ बेटा. What is sentence? A sentence, a group of words that makes complete sense is called a sentence. Phrase, a group of words that make sense but not complete sense. In parts of a sentence, there are two parts of a sentence: subject and predicate. Subject and predicate. There are two parts: subject and predicate. I have given you some examples from your exercise. Next beta, the kinds of sentences. There are four kinds of sentence. Four kinds of sentence. Assertive. Assertive is also known by the name of declarative sentence. Next beta, interrogative. Next third number पर imperative sentence, and fourth पर है आपका exclamatory sentence. And I have given you some example of four kinds about statement, about interrogation means questions, command, request, and advice, in last exclamation. So thank you for today beta. That was all for today. That I have explained you, and meet in next video. So thanks again.